Come with me, let's attend the wedding. But before that, let's get ready. Let's get started. Hey guys, assalamu alaikum. This is your girl Saher. Welcome and welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. I am doing good too. Thank you so much for clicking on this video, and we have the lights turned on. And as you can see, I have got my hair colored to this beautiful brown color, which I am absolutely loving it. आज है एक wedding. I am going there and I'm running late. Actually, wedding is at 11:15 in the morning, so I have to rush over there. And कल मैंने मेहंदी लगाई थी. Um, we went, it's not from the bridal party, we went because मम्मी ने डे बिफोर लगाया था और मैं कल लगाई थी because I know my मेहंदी will turn black and come out very soon. So yeah, so this is how the henna looks like. Let me show you the other hand. So this is the other hand. एंड मुझे अभी तैयार होना है. मैंने हीटर ऑन कर लिया है. अभी मैं जाके नहाऊंगी, फ्रेशन अप होंगी एंड देन जल्दी जल्दी रेडी होके by 11:30 max I have to leave the house, and I have just like half an hour remaining. And yeah, I just came from outside actually. मेरा सिम जो था इस फ़ोन का was not working. It was dead. Like it was a very old sim, so it was not reading in my phone for the past 4 days, and finally I was like, no, I have to get it done because otherwise I will get busy and then hoga nahi. So that's why I was like थोड़ा सा लेट चली जाऊंगी शादी में, बट ये काम करना बहुत बहुत ज़रूरी था. तो एनी विच वेज I am going to get ready and leave, and I have to also gift wrap the gift, which I haven't done till now. So I am very busy from the past 2-3 days. शादी किसी और की हो रही है और busy मैं हूँ. Tiny bit hungry, so maybe I will eat an apple too while I am getting ready because I'm like famished. Any which ways, let's go and let's start our day. ऑलरेडी यू गाइज मैं नहा के आ गई हूँ. अभी मैंने लेंसेज पहनी है. लेट्स डू सम रियली गुड स्किन केयर एंड देन head out soon. So applying toner, I'm using Round Labs Car Tutko toner. This is really good when you want a nice hydration wala moment. My skin is feeling a lot drier these days for some reason. I am going to be using a CeraVe. Can you see CeraVe moisturizer because it's really nice and thick. For sunscreen, I will be using Dr. Sheth's Ceramide and Vitamin C long lasting sunscreen because the wedding is in the day and you need good SPF protection. That sunscreen is cooking in my skin juices. Let me just do my hair really quick. And this is the first time I am washing my hair post hair color, so I don't know how it's gonna look like because there will be some sort of change post your hair wash. So just comb my hair using the Alan Truman's hairbrush. This is a wonderful hairbrush for wavy hair. I'm gonna be using L'Oreal's Revitalift. I have only this much left, so I'll be using that on my ends because God alone knows how much I need this. I am going in with this cream, Amaryllis cream, as a additional primer step because my makeup tends to get a little bit crackly because my dead skin is dry, so I need all the hydration. ओके से हाई टू वॉइस ओवर सैर बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं बकबक करूँगी. तो यहाँ पे मैं मेरे बाल बांध रही हूँ बिकॉज गर्मी बहुत है एंड फ़ैन का नॉइज़ भी मेरा बहुत गंदा वाला है. तो एल्फ का मैंने हाइड्रा ग्लो प्राइमर यूज़ करा है. आई लव दिस ग्रिपिंग प्राइमर. इट्स वेरी ब्यूटिफुल. Did I just say Hydro Glow? No, it's a gripping primer. And then I'm using Benefit's brow pencil. This is the only pencil I absolutely love. It's totally worth your money even if you're paying so much. And
the strokes I get is unreal. I absolutely love it. It's very good for my sparse thin brows, and it's a 10 on 10 from me. And then I'm just using the spoolie side of it to comb it out and correct it. Then I am using Elf's Hydrating Camo Concealer. I got this in a darker shade just to conceal my eyes because I don't like to layer many products, and color correcting is something I absolutely hate. But yeah, nevertheless, just using this, it's a very hydrating formula nonetheless. But is it my favorite? Not yet. I still love the Cuffs and Lashes concealer, which are out of stock, and my heart breaks. Thinking that it might not come back in stock. So yeah, but any which ways, I am blending everything in. I've applied the concealer wherever I felt I had a lot of marks and everything. And then as per usual, whenever I have to go on functions and everything, I use Swiss Beauty's airbrush foundation. It's absolutely a favorite. I wouldn't say it's a full coverage, but it's a high medium coverage formula, and it's enough for me. I don't want a formula which is full coverage, cakey looking. This is really good. I love the finish of this. It's not too matte. It's like a satin matte kind of a finish. फिर इसको मैं एक बार अच्छे से सेट कर ले रही हूँ with Mars का setting spray. I am still not sure about the setting spray, but any which ways, यहाँ पे मैं realize कि जब मैं edit कर रही थी that a lot of my initial clips were lost. Any which ways, मैं हुदा ब्यूटी का rose quartz palette यूज़ कर रही थी. उसमें से एक मैंने pink shade transition पे लिया, और एक purple black shade था जिसको मैंने outer corner पे लगाया. फिर जेम्स चार्ल्स की palette से मैंने green color का shade लिया, shimmer shade, and apply किया outer corner पे. एंड फिर एक आप देख रहे थे ना, पिंक वाला शेड यूज़ करा, विच हैज़ पिंक एंड गोल्ड डो क्रोम इफेक्ट. फिर मैंने एक प्रॉपर गोल्ड वाला कलर लिया विच इज़ अ फॉयल कलर, एंड देन इसको इनर कॉर्नर्स पे लगा लिया. एंड देन जो भी ब्लेंड कर रहा था फ्रॉम द इनिशियल ब्रश दैट आई हैड यूज, उसी से मैंने थोड़ा सा इवन आउट कर लिया ताकि ब्लेंडेड आउट लगे. फिर मैंने क्यूर ब्यूटी से इनका ब्लश स्टिक लेके, दिस इज़ अ पीची पिंक शेड एंड आई रियली लव इट बिकॉज इट फ्लैटर्स मी सो मच. तो मैंने वो लिया. फिर देन आई रियलाइज़ मैंने कॉन्टूर करा ही नहीं, एंड मैंने के ब्यूटी की कॉन्टूर स्टिक यूज़ की जो कि अंदर से पूरी टूट गई थी, एंड आई वाज इन शॉक. बट एक साइड पे ब्लश है, एक साइड पे ब्लश नहीं है, इसलिए क्योंकि मैंने बाद में रियलाइज़ किया एज आई वाज टेलिंग यू गाइज. एंड उसी ब्लश ब्रश से मैंने कॉर्नर से उसको ब्लेंड कर लिया, एंड यहाँ पे मैं ब्लश लगा ले रही हूँ ऑन द अदर साइड ऑफ द चीक, and I like it. Then I contoured my nose. I love the K Beauty ka contour stick. It is one of the best sticks, and I love using it whenever I have to go. Usually मैं contour or bronze नहीं करती हूँ because I feel it's fine. It's a necessary for me. I feel it's an additional step, but it's good if you want a chiseled out face. I just love applying a lot of blush for makeup and less of contour and bronzer. Anyways, but function था तो मैंने लगा लिया. फिर एल्फ का मैंने हेलो ग्लो लिक्विड फिल्टर लगा लिया. आई हर्ड दिस इज अ ड्यूप फॉर शार्लेट टिलबरी. I have bought it a little darker shade, so I'm a little less impressed by it. But some days when you want to have that bronze look, this just gives it. And इसमें shimmer particles बिल्कुल भी नहीं है, तो it doesn't highlight my texture. That's the reason I don't apply a highlighter. Then मैं satisfied नहीं थी with the concealer, तो मैंने थोड़ा सा लाइटर शेड था मेरे पास, उससे मैंने हाईलाइट कर लिया wherever I felt I needed a little tiny miny more of coverage. फिर इसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी. द प्रॉब्लम विथ मी इज़ दैट मैं इतना हरी बरी में रेडी होती हूँ कि मैं बैठ के सुकून से भी नहीं देखती हूँ कि सारे स्टेप्स ब्लेंड हुए हैं या नहीं हुए हैं. एक तो सामने इतना बड़ा लाइट होता है, तो फिर जब मैं फिनिश कर देती हूँ फिर उसके बाद मैं क्लिप्स देखती हूँ और अपना फेस देखती हूँ, एंड देन आई ब्लेंड इट आउट. एंड सर्टन टाइम्स वीडियोज़ में थोड़े बहुत अनब्लेंडेड पैचेस दिखते हैं, बट मैं वो बाद में करेक्ट कर लेती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, 80% ऑफ द टाइम्स. फिर के ब्यूटी का मैंने यहाँ पे पाउडर लिया है क्योंकि सारे मेरे क्रीम प्रोडक्ट्स का काम हो गया था.
तो के ब्यूटी का पाउडर आई थिंक इट्स इन द शेड बनाना बट आई एम नॉट श्योर. सारे डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई फोरहेड एरिया बिकॉज मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेट होता है, तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग इट. एंड ये रिमल लंडन का ब्रॉन्ज़र है. दिस इज़ ड्यूब फॉर बेनिफिट का हूला ब्रॉन्ज़र. I think it's even better than that. So yeah, I really love it because I don't own the Benefit bronzer, Hoola bronzer, but I've tried it, so I know how it feels like. And यहाँ पे मैं Essence का blush use कर रही हूँ. This is a perfect blush. It's light and it gives the proper color on my cheek without it looking like I'm a clown. And then I'm again going to use the setting spray very nicely, generously, and I'll try that out. Then I will go in with mascara because I will mess it up if I apply setting spray on it. तो फिर मैं अच्छे से 2 coats of mascara लगा रही हूँ क्योंकि I'm not gonna wear any falsies. I'm not a falsies person, so I am going to make sure that I use mascara. And then I went in with Blue Heavens eyebrow gel kind of a situation thingy that this is, and I really like it because it sets my brows in place, and because I have thin sparse brows, this is perfect for me to give a hold. It doesn't feel crunchy on my lips. Then यहाँ पे मैं Mars का Edge of Desire lip liners use कर रही हूँ in this brown kind of a shade. The only problem with Mars ke lip liners up until now was that they had more warm shades in it, but I feel that they have introduced few other colors which have cool toned lip colors in it. एंड यहाँ पे मैं कीरो ब्यूटी का लिपस्टिक लगा रही हूँ विच इज़ द पीची शेड, एंड आई एम ट्राइंग टू क्रिएट एन ओम्ब्रे सॉर्ट ऑफ अ लुक. एंड देन आफ्टर दैट आई एम गोइंग इन विद द लिप ग्लॉस फ्रॉम स्विस ब्यूटी. दिस इज़ द शेड कैरामल क्रंच बिकॉज आई रिमेंबर इट सो वेल बिकॉज इट्स माई एब्सोल्यूट फेवरेट. एंड यहाँ पे मैं एल्फ हेलो ग्लू लगा रही हूँ ऑन माई chest area because it's a wedding and it's good to shine a little bit and match my face. So that's what I'm doing, and this is the final look, you guys. Let me know in the comments if you like it, and share this video with your friends and family members. यहाँ पे मैं bangles पहन रही हूँ, and that is it. You guys, मैं ready हो चुकी हूँ. अभी जाके neck का कान का सब change करूँगी बिकॉज मेरी ज्वेलरी वहाँ पे है. सिर्फ बैंगल्स डाल लिए एंड फ्यू रिंग्स डाल लिए. सो लेट मी जस्ट गो टू माई मॉम्स प्लेस एंड देन get ready finale, and then I will show it to you guys.